Today we have to discuss atomic mass of first 20 elements. That is elements from हाइड्रोजन टू कैल्शियम. इनको हमें मेमोराइज करना है, याद रखना है. हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरान का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियॉन का होता है 20. इसी तरह सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 28, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, एर्गॉन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39 एंड कैल्शियम का भी होता है 40. Now we have to memorize this. That is the atomic mass of hydrogen is 1. और फिर लिखा होता है 1U. यहां होता है लिख के 1 AMU, यहां होता है लिख के 1 ग्राम. That depends upon the question. 1U का मतलब होता है, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल 1U लिख के होगा, that means 1 unified mass. अगर यहां पर लिखा होगा 1G, that means 1 ग्राम. अगर यहां पर लिखा होगा 1 AMU, that means 1 atomic mass unit. It depends upon the question then. ये फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन पूछा होगा. लेट्स मूव दैट वेरी वर्जन कि जो ये मैंने यहाँ पर ये आपको मेमोराइज करने को बोला, ये किस में यूज होता है, इसका यूज क्या है इसमें. फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है कि आप निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होता है. हाउ यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड? दैट इज अ क्वेश्चन that is asked in certain exams. For example, if you are a question in a competitive exam just like this, what is molecular mass of CaCl2? That is calcium chloride, CaCl2. This is a compound formed by 1 calcium and 2 chlorine. That is Ca is 1 calcium, Cl2 is, these are 2 chlorine. How we determine the molecular mass? That is a question in certain exams. First of all, you have to keep in mind this very chart. That is the atomic mass of elements from hydrogen to calcium. Here in this compound CaCl2, there are 1 Ca, that means Ca plus Cl plus Cl, that means 1 Ca 2 Cl, 1 Ca 2 Cl. How to determine the molecular mass? That is the question. First of all, we will find out the individual mass of calcium and chlorine. Calcium and chlorine. Here in this chart, the atomic mass of calcium is 40. We will write here 40. Plus, we have 2 chlorine here. Atomic mass of 1 chlorine is 35.5. That means if we have 2 chlorine, then their atomic masses will be, their combined atomic mass will be 35.5 multiplied by 2. That means 35.5 multiplied by 2. That comes out to be 71. When we multiply 35.5 by 2, the answer comes out to be 71. That means the combined mass of Cl and Cl is 71 and the individual mass of calcium is 40. Then
what we have to do? We have to add these masses and we will get the molecular mass of calcium chloride CaCl2. That means 40 plus 71 is equal to 111. When we add 40 and 71, the answer comes out, that is 1 1 and 1. And आपको मिलेगा वहां पर certain books में कि 111 gram, 111 U or 111 AMU. That depends upon the question. In which unit the examiner has formulated the question, has framed the question. Okay. Now let me move to the next example. How to determine molecular mass of any other compound. For example, we have H2SO4. H2SO4. That is known as sulfuric acid. H2SO4 is known as sulfuric acid. No need to write here name because today we have to discuss molecular masses. That's it. In this H2SO4, we have H2, that means hydrogen plus hydrogen, S plus O4, O, 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 O. That means H2, these are H2, S, S, O4, 1, 2, 3 and 4 O. जो सल्फ्रिक एसिड है इसमें होते हैं 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन. हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे काम, हम इसको खोलेंगे. H2SO4 को हम खोलेंगे. दैट इज H2SO4 is just like H plus S plus O plus O plus O plus O. Okay. Now here in this table, हम इस टेबल की ओर नजर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा. यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका क्या है 1, तो हम हाइड्रोजन के बदले में लिखेंगे 1 प्लस और एक हाइड्रोजन है इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 प्लस सल्फर जो है इसके बदले में क्या लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन के बदले में क्या लिखेंगे 16, इस ऑक्सीजन के बदले में 16, इस ऑक्सीजन के बदले में 16, इस ऑक्सीजन के बदले में 16. And when we would add these 1 plus 2, 1 plus 1 is 2, plus 32 is 34, plus 16 is 50, plus 16 is 66, plus 16 is 72, plus 16 is 98 grams. That means that combined mass of all the atoms which are present in sulfuric acid is 98 grams.